हम विचार कर रहे थे कि किस तरह से ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, त्याग आधारित, प्रसन्नता, प्रसन्नता और संभाव, इसको और ठीक से समझा जा सकता। तो एक दो बातें जो उठी थी कल, आज सुबह की चर्चा में सुबह में हुई थी, कुछ कल भी आई थी, कि हमको खास तौर पे त्याग आधारित प्रसन्नता और निरामिष प्रसन्नता में भेद कर लेना चाहिए, समझना चाहिए। जो भी त्याग आधारित अनुभव है, उनका आधार जो है वो प्रज्ञा, इंसाइट है। 3 लक्षणों में इंसाइट। लेकिन सामान्य त्याग के आधार पे भी हमको प्रसन्नता तो मिलती है ना। तो वो जो प्रसन्नता होगी उसको हम निरामिष सुख कह सकते हैं। हमने कुछ दान दिया, समय का दान दिया, वस्तु का दान दिया, या कुछ हमने पढ़ा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा, जिससे हमें बहुत प्रसन्नता हुई। कोई धर्म पद की वर्ष पढ़ी या कोई चैंटिंग सुनी, इससे प्रसन्नता हुई। तो वो सब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है वो जो है गृहस्थ प्रसन्नता, अप्रसन्नता या संभाव होगा। और जो इनसाइट के ऊपर बेस्ड है वो त्याग आधारित या नेखम्मसिता, दो मनस्य या उपेक्षा भाव। तो ये उसका मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। तो इसको हमको याद रखेंगे तो फिर हमें क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं हो। अब इस बात को गिव मी अ मिनट। इसको और ठीक से समझने के लिए हमने सोचा कि कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जाए। तो मैं आपके सम्मुख कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, आप उसको एनालाइज करके देखिए वो किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक उदाहरण त्याग का हम ले सकते हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की थी महाभारत से, कि जो देवव्रत है उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना जो उनका अधिकार बनता था, जो जिसके कि वो उत्तराधिकारी थे कि वहाँ रंगपुर के राजा बनेंगे, वो उन्होंने त्याग कर दिया। नॉट ओनली दैट, उन्होंने अपना गृहस्थ सुख भी त्याग कर दिया कि मैं शादी भी नहीं करूँ। तो उस इन दोनों त्याग से ऑब्वियसली ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। मैंने अच्छा काम किया है, एंड देयर मस्ट हैव बीन प्लेजेंट फीलिंग्स इन दैट। बट ये त्याग किस कैटेगरी में है? गृहस्थ आधारित, निरामिष। अच्छा, Yeah, it will be निरामिष सुख। It will be of the गृहस्थ आधारित, of course, but it is निरामिष सुख because it's based on some giving up certain object, giving up certain things, giving up certain expectations, certain kingdom. Kingdom is a very big thing to give up. बट है तो फिर भी गृहस्थ आधारित ही। Yeah, that's what I'm saying. Yeah? So we should look at it in that manner. Another example we take from the lives of two young Brahmin from ancient times of the Buddha by the name Upatissa and Kolita. उनके अपने
काफी इंटेलिजेंट लोग थे, पढ़े लिखे, तीनों वेदों में पारंगत। और there's a scene which comes in their life which is recorded in that Buddha's life film also. वो वहाँ पे एक ईयरली मेला होता था, तो उस मेले में बैठे हुए वो दोनों, एंड वहाँ डांस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, पीपल आर एंजॉयिंग एंड दे आर जस्ट सिटिंग देयर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। और एक समय ऐसा आता है कि वो बैठे हैं, तो एक दूसरे को देखते हैं कि दोनों में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। कहते क्या हो गया भाई? वो उपदेष्टा कोलिता से पूछता है कि तुम उस तरह मुंह करके बैठे हो, तो तुम भी तो सिर नीचे करके बैठे हो, मैं तो ऊपर हूँ। तुम तो इंटरेस्ट ही नहीं आता, इतना देख लिया। what what pleasure do you get by seeing some dancers singing and dancing and singing? And मालूम है ये कुछ सालों में इसकी हालत खस्ती हो जाएगी, कुछ सालों में बुढ़िया हो जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, न हमारे न सुनने लायक रहेंगे, ना ये दो गाने लायक रहेगी। what joy is there in this kind of a temporary satisfaction? It's disgusting actually. चलो उठ के चले जाते, and then they say क्या क्या करना चाहिए? I think we should seek something which is permanent. ये सब क्या है? We don't know what is permanent and how can we get permanent happiness or permanent freedom from suffering. Okay, let us try to find some teachers, and then they go and find. Leave it at that. Now, what is this description of this phenomena of their leaving the मेला साइड से छोड़ के उठ के चले त्याग जाते आधारित हैं? अप्रसन्नता, त्याग आधारित Disenchantment. अप्रसन्नता। Does it ring the bell? Does it become clear कि त्याग आधारित अप्रसन्नता है? Yes. इसमें किसी को डाउट हो तो we can discuss. Sir, Payal just said disenchantment. Do you want to explain that? Well, that's also true. Yeah, that's also true. We are discussing it in this categorization. Yeah, those categorization, because disenchantment can be again due to various reasons. Yeah? If you talk of Nibbida as a factor of enlightenment, then of course it has to be in this direction only. मैं एक सबमिशन करना चाह रहा था कि त्याग आधारित प्रसन्नता को जब हम बात करते हैं तो त्याग आधारित अप्रसन्नता में संतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप। इसका बेसिक पहले कुछ तो मालूम होना चाहिए। You see, there is a novice and he has all of a sudden got that feeling, then I will agree with Payal, it is disenchantment. I cannot really club it into त्याग आधारित प्रसन्नता because अभी तो उनको concept ही नहीं मालूम है. They have not been exposed. The reason they are leaving it is, why are they leaving? Because they understand it is impossible. It is not. We presume. It's not. It is not No, permanent. these are their words. This is their dialogue. आप वो मैं चाहता था वो फिल्म का कट कर पाऊँ, नहीं कर पाया. You see that this is a part of that. I mean, it's a part of obviously commentatorial literature. कोई इसकी वो authenticity तो मैं कह नहीं सकता. Commentatorial literature. So they were already that much elevated कि उस उम्र में they had भी studied all the, ध्यान they हो had गया. studied all the Vedas. They are expert in all the whatever knowledge was available at that time. जो भी उस समय ज्ञान अवेलेबल था, मैंने तभी आपको उसका डिटेल बताया कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, इसलिए बताया था. तो कह रहे यार ये तो कुछ समय में ये भी बुढ़िया हो जाएगी, मरवा जाएगी. These are the words which essentially means impermanence. कुछ समय हमारी भी हालत खराब हो जाएगी. अब कब तक इस तरह का सुख दे रहे हैं? इतने सालों से हम सुख लिए जा रहे हैं, कोई रखा है नहीं इसमें. That is the real realization of impermanence of the sensitive pleasures, impermanence of the objects. तो impermanence और उसकी unsatisfactory के आधार पे ही they left the place.
इसमें साथ में ये भी लिखा है कि मैं कब उस आयाम में प्रविष्ट हो इसमें विहार करूंगा जिसमें आर्य प्रविष्ट हो विहार करते हैं. So then they said, why don't we seek something which is permanent? They may not know the word Arya. Why don't we seek permanent freedom from suffering? That's it. तो ये दो पार्ट्स में हो गया ना. एक पार्ट तो ये हुआ कि उनको इस बात का आभास हो गया कि वो विमुक्त होना चाहिए और ये जो है इतना. तो वो मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं दो पार्ट में लूँ तो जो पहला पार्ट है, जब मैं त्याग आधारित प्रसन्नता की बात करता हूँ तो त्याग आधारित प्रसन्नता में ये लास्ट की लाइन नहीं लिखी है कि अप्रसन्नता. मैं प्रसन्नता की बात कर रहा हूँ. त्याग आधारित प्रसन्नता. मिक्सअप ना प्लीज, लेट्स नॉट मिक्सअप ना. उसको अलग से, उसका फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है. वो जो त्याग आधारित प्रसन्नता है उसमें दोनों में कॉमन है एक्सेप्ट वन थिंग विच इज द लास्ट वर्ड कि मैं कब आर्यों के पास वैसा प्रविष्ट करूंगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू. उसमें अप्रसन्नता जाग रही है, उसमें प्रसन्नता जाग रही है. मैं वही आपसे निवेदन जो था वो ये था कि त्याग आधारित प्रसन्नता में ही यही है कि रूप अनित्य है, परिवर्तनशील है, यथाभूत प्रज्ञात रूप देखता है, सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, तो अनुपम विमुक्ति की लालसा स्थापित करता है. फुल स्टॉप. ये अप्रसन्नता की बात. ये प्रसन्नता में भी यही लिखा है. प्रसन्नता में अनुपम विमुक्ति की लालसा कहाँ से आ गई यार? देखिए सर, ये लिखा है ना, त्याग आधारित में सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है. प्रसन्नता उत्पन्न होती है. हाँ, त्याग आधारित प्रसन्नता. हाँ, तो त्याग आधारित उसी अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले कई बार कह चुका हूँ, उस अंडरस्टैंडिंग की इनिशियल फेज में ये प्रसन्नता महसूस हो रही है. सेकंड डेप्थ में अप्रसन्नता पैदा हो रही है. थर्ड डेप्थ में संभाव पैदा हो रहा है. मैंने कल भी परसों भी कहा था ये बात. मैं वही आपका निवेदन ये था कि एक ही इंडिविजुअल को ये ही स्टेजेस आएंगी एट वेरियस स्टेजेस. जरूरी नहीं है, प्लीज, इट्स नॉट नेसेसरी. It's not necessary that he has to go through 1, 2, 3. One can directly jump simultaneously. No, it can jump directly to equanimity. उसका मन इतना बिछड़ जाए उस सब से कि सब बकवास है, सारा संसार, कुछ रखा नहीं है. He can straight away go to equanimity. Yeah, why not? It depends on depth of his understanding and depth of his dispassion which arises. It all depends on so many multiple factors. Again, so every individual is therefore unique, is designed to behave in a different manner as far as their enlightenment is concerned. Yeah, we shouldn't say design is different. Yeah, there's no designer. It's different because of the past sankharas. Yeah, that's what I'm saying. Designed in a sense that it is based on his past sankhara. So he has reached that stage that he can straight go to. That's what I meant. भगवान की शिक्षा से इतना हम देखते हैं, वो बाह्या एक छोटा सा 10-15 लाइन सुन के मुक्त हो गया है ना. तो हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड देयरफॉर ही गेट्स ट्रिगर्ड बाय वेरी स्मॉल थिंग. अदर्स डोंट गेट ट्रिगर्ड. नो, राइट. जैसे उदाहरण भगवान देते हैं ना कि कमल के फूल हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बहुत नीचे है. सो दैट्स हार्ड रियलिटी. जी, थैंक्स. इसी आधार पे कहा जा रहा है. थैंक्स. और कोई किसी तरह का शंका आ रही है तो बताइए. So all three don't need to be present, Dharsab. In this case, principally impermanence is present and perhaps unsatisfactoriness, you know. Yeah, and the factor, जो third element है ना, the element of impersonality. If we study the story, the Anatta sutta, for example, on what basis that the Buddha say the anatta arises? First statement is uncontrollability. That things are not within our control. So the understanding of anicca is
It depends to what extent the person is able to really penetrate into it. It will lead to dukkha and it will lead to anatta also. In some I mean, Darsab, don't you want to be margin, don't you want to be careful saying something like that? Because that's exactly the problem, isn't it? We keep assuming कि अनिच्चा अनिच्चा कर लो तो अनत्ता अपने आप हो जाएगी. That's exactly. करने से नहीं होगा ना. One is, that's why I'm repeatedly saying depth of understanding. We can't avoid that. So if you say just unless the depth of understanding is there, things won't move really. Okay, so you're saying कि ये inherent हैं, ये तीनों in a sense interlocked हैं ये. Is it? Yeah, that's it. We say anicca dukkha sanya, dukkha anatta sanya. They're all linked. Anicca understanding to such an extent that it leads to the understanding of dukkha. Dukkha understanding to such an extent that it leads to understanding of anatta. Because then you see that they are not within my control and they are not personal. So that dimension comes up when you really reflect on it very deeply. Correct. No, I understand. So in this case, the presence of not self in the minds of these two is not apparent in the story. It's not apparent. Yeah, that's true. So what I'm saying to you is that it's okay, even if any one of the three is to some extent present, you are beginning the renunciate path, so to say. Yeah, I would say. Yeah. I would say. Okay, very good. Yeah, I just wanted to check that. Very good. Please carry on. Thanks. Yeah. Sir, it is basically insight. Now, to what extent insight is developed would be determining where does one lead to, which point does one lead to. Right. So in fact, आपने पहले भी कहा था that it could also be like in some of the discussions that have happened, it is possible that some of the people are experiencing a certain level of insight, maybe very minimal, but it is there. So then it's, why not? Certain. Actually, yeah. One has to verify for oneself. That's what I have been always saying. Yeah, sure. One has to verify for oneself. So इसको भी हम फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है कि तीनों के बारे में आपने सोचा कि नहीं, आपके मुंह से अनित्य शब्द निकला कि नहीं, वगैरह वगैरह, isn't it? It's really the present. Yeah. Because if you see the dialogue between these two people who ultimately became Sariputta and Moggallana. Sure. Yeah. The dialogue was this, which is quite commonplace dialogue if you can really see it in that. But how many of us can really see that part? ये सब हर साल यही देखे जा रहे हैं और ये जो लड़कियां हैं वो धीरे धीरे बुढ़िया हो रही हैं and they'll all wither away, we'll also wither away. और जो सुख है वो भी इतना क्षणिक सुख है, कब तक हम इसको एंजॉय करते रहेंगे? तो अब तंग आ गए इसको एंजॉय करते करते. You must seek something permanent, freedom from, because we have come here only to seek freedom from what is suffering. वहाँ मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, चलो यहाँ आ जाओ. But this is not a solution. So we say, we should find a permanent solution. Now these are words which are not technically in that direction, but the implication is same. The implication is same. They are not using those words because they are the first few disciples. But for us who have been exposed to the teaching in its fullest extent, we should be able to see it more clearly. So do I understand correctly that all the three do not necessarily have to be together? See, it's a very risky statement to make. If we make it as a formula, there are suttas in which Buddha says the insight of anicca will lead to insight of dukkha, and the insight of anicca will lead to insight of anatta. Now, does it really happen for us? On that. And there's that famous word discussion with Meghiya as its name. That if anicca sanya is fulfilled, it will lead to anatta sanya. And so people, I know many very senior meditators think anicca पूरा हो गया तो अपने आप हो जाएगा. वो अपने आप नहीं होता. इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए. One has to reflect on it. One has to understand it. Or the depth of penetration is so strong that you automatically come to realize it.
It doesn't happen just because we have observed the, say, body to be changing constantly, or even feelings to be changing constantly. That's not enough. That's at least my own experience has been that. And because वो जो शब्द है ना, उसके अंदर इतनी प्रिसाइज वर्डिंग्स है, तो उन वर्डिंग्स की जो डेप्थ है वो वर्ड्स में नजर नहीं आती है. क्योंकि अगर अनित्य लक्षण की बात सुत ना होता, और वो इतने पहुंचे हुए भगवान के 3-5 अज्ञेय भिक्षु धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सुन के वो उनमें से एक को ही बात समझ में आई और अनित्य बोध जागा, जबकि उसमें अनित्य बोध की कोई बात ही नहीं है सूत्र में. So it's obviously he has a insight carried over from his Kundanya, who was the senior most among them, and a very renowned Brahman at the time of Buddha's birth. He was very old at that time. So उसकी बैकग्राउंड इतनी ज्यादा थी कि वो पेनिट्रेट कर पाया. उनकी बैकग्राउंड थी उस डायरेक्शन में, and therefore just listening to that discourse was enough. We have listened to that and reflected on it for dozens of times, but we're not able to penetrate so strong. So दर्शक साहब, ये जो मसला है ना कि मुझे एक दिखता है या दो दिखते हैं वगैरह, आपको याद है सुरेंद्र जी ने भी आपसे एक बार पूछा था कि अनात्म तो दिख जाता है बट द रेस्ट आर नॉट देयर, एंड सो सिमिलरली देयर कैन बी मेनी परम्यूटेशंस ऑफ दिस, है ना. तो अब मुझे ऐसा, व्हाट आई एम हियरिंग यू से, एंड आई एम गोइंग टू पैराफ्रेज यू, सो यू मे काइंडली देन करेक्ट मी, कि जिस तरह के पुथुजन या सेखा हम लोग हैं, हमारे लिए ये इनकम्बेंट है कि अगर हमें वास्तव में पेनिट्रेशन करनी है तो हम तीनों एंगल्स को किसी भी सिचुएशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे अलग अलग तरीकों से लगाने की कोशिश करें, एंड वी ट्राई एंड पेनिट्रेट ईच ऑब्जेक्ट और ईच सिचुएशन यूजिंग ऑल थ्री. That is perhaps the way for us. So setting aside how the sutta is putting it, to not presume that I am a Buddha and therefore, Yeah, that's why I've been stressing so much on all the three being present, because the जैसे कल या शायद परसों बात हो रही है अदिति से, शायद the chances of overestimation are very high, and therefore we can get into a wrong complacency very soon. नहीं, मुझको अनात्म का अनुभव हो रहा है, फर्स्टली हो ही नहीं सकता अनुभव नाम की चीज. I have a feeling of that kind. Fine, good. Verify, check it up again, check it up against the insight of dukkha, check it up against the insight of nichya. These points are very helpful for us. That's why so much diversity in the teaching is there. इतनी diversity, 36 पक्षीय बोधि के अंग, so many bhujangas and nivaranas and all those kind of lists which Buddha has given. They are to ensure that we don't come into complacency because of some one good pleasant experience. So because I have gone through that complacent, I mean that phase of wrong estimation, that's why I'm trying to be more careful. And I've seen it, not just for me. I'm not being excessively modest and things of that kind, but I've seen it happen with senior people, very, very senior. सर, ये जो हमारी यर्निंग फॉर परमानेंस होती है, ये दुख को देती है, इट गिव्स राइज टू दुख, ये तो समझ में आता है. तो दुख अनित्य तो इंटर रिलेटेड लगते हैं, अनात्मा उसके साथ कैसे इंटर रिलेटेड है? I think we have discussed it. Probably you have missed that discussion. अच्छा, So I'll go through the old ones and then. Yeah. दीपक जी ने हैंड रेज किया हुआ है. हाँ जी, सूरज बोलिए.
मेरी ना एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बेसिक्स, और ब्रेकअप रूम में मैंने देखा कि किसी हद तक वो प्रॉब्लम मेरे साथियों में भी है। हम लोग असुखद अदुखद फीलिंग्स को इग्नोर कर देते, वी जस्ट डोंट ऑब्जर्व, हमारे जहन में नहीं आती कि हम उनको ऑब्जर्व करें। तो उनके बारे में पेनिट्रेट करना तो दूर रहा, उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते नॉर्मल कोर्स। तो कैसे हम अपने में ये एक उनको ऑब्जर्व करने की एक प्रवृत्ति जगाएं? हाउ टू, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम बहुत बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। जी, तो प्रैक्टिस की बात है ना, हाउ वेल वी आर प्रैक्टिसिंग इट। हाँ, कमी तो है हाउ टू डेवलप इट, दैट प्रैक्टिस। Repeatedly doing it when we are sitting quietly. Suppose all of us have sometimes few minutes to few hours when we can sit quietly and can just investigate what experience is there at the moment. अगर हम इस तरह से इन्वेस्टिगेट करने लगे तो पता चल जाता है। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो न्यूट्रल ही होता है। अच्छा, ठीक है जी, आई विल ट्राई एंड देन। अगर हम चुपचाप बैठ जाए, अभी भी बैठ जाए, मान लीजिए चुपचाप बगैर कुछ किए, एंड सी हाउ एम आई फीलिंग, what is the general sense of feeling in my mind at the moment, is the state of mind somanasya, domanasya or upekha, just that much. Be quiet and just check up and find out. तो अगर उपेक्षा में है तो उसको हम be aware कि ये भी बदल रहा है। हाँ, वो भी बदल रहा है, बस just लेकिन be aware of that, just be aware of that impermanence of that. तो And you उपेक्षा can एक notice किस्म का noting the tendency of mind to ignore it, run away from it, seek something. You can note that tendency of the mind. खासतौर पे जब हम मैं खुद जैसे करता हूँ, बता दो, मैं काम कर रहा हूँ, थक गया, मन काम नहीं करने का चाहता, I sit quietly, and when I sit quietly I immediately realize कि मन में जागता है, ये कर लो यार, ये कर लो, वो कर लो, कुछ कर लो। मैं शांति से चुपचाप भी बैठ रहा है। So I can see that mind's tendency कि कुछ कर लो, चलो वो देख लो, कुछ वीडियो देख लो, कोई डिस्कशन पढ़ लो, कोई न्यूज़ देख लो, कुछ कर लो। अरे चुपचाप क्यों नहीं बैठते भाई तुम? क्यों? क्योंकि there is no stimulation. Feeling is neutral, and you want some stimulation. So it's a fun, to see how the mind keeps on seeking something. शांति से नहीं बैठना, कुछ करना है। So that is a very valuable lesson. I mean, of course, many times सबका कुछ करना है तो कुछ, हाँ ये important है, चलो ये कर लो। And I see how the mind is running away. It doesn't want to sit quietly and see what's going on because it is not interesting. It's neutral feeling. जब दुख होता है तो बैठ जाएगा चुपचाप, बस सुख होगा तो बैठ जाएगा, एंजॉय करेगा, उसको देखता रहेगा। बट न्यूट्रल को देखना वो refuses to see it. That's very true. So we have to really practice, develop our own methods of identifying when we are unnecessarily seeking some distraction. Okay. तो क्या मैं मानूं कि जब हम शांति से बैठे हैं, मे बी फॉर अ वाइल, उपेक्षा में, तो कैन बी इंटरप्रेट एज ए असुखद अदुखद संवेदना? Darsa, be careful. You've used upekha as a feeling, huh, Darsa? That might be a source of confusion. Yeah, So maybe upekha as a feeling is adukhad asukad vedana. That's fine. Okay. Yeah, that's मेरे सामने दीवार है, दीवार को देखता हूँ, वो तो उसमें कोई न्यूट्रल फीलिंग ही है, जो फीलिंग न्यूट्रल ही कहेंगे। नो फीलिंग मींस देयर इज न्यूट्रल फीलिंग, असुखद अदुखद। कुछ फीलिंग है, वो कैच नहीं कर पाते उसको। बिकॉज हमारी टेंडेंसी जो है, बेसिक टेंडेंसी, रिएक्टिव टेंडेंसी है ना, तो उसमें या तो प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, उन दोनों के बीच में ही घूमते रहते हैं। टेंडेंसी ऑफ द माइंड। So we practice slowly in that manner. Yeah. That's why some of our teachers Lungpo कहते रहते हैं, observe the space rather than people, or silence between words. So that's kind of kushal upaya for us to not get caught in the objects, visual objects, auditory objects, or any other object.
which hopefully will produce, is responsible for neutral what feelings. Dukkha the sukha. All right, I'll try and then get back in case need be. Ignore बहुत हो जाता है, ठीक है? Any, All right, thank any you. other comment, or then I'll give some more example. Now let us say one example with which we are all, I think, familiar. I'll go through some sequence of it just for sake of making it more lively. See, we have been all trying to get some land for the monastery so long. And in March, I think, sometimes in March this year, we had gone and the land deal was finalized. The land price was finalized. Sorry. Then in April, or I think Anish and Kamal and Deepak Tilani, our treasurer, they went and they said we'll finalize the deal. And तो जितने हमारे पास बैंक में पैसे थे उसको इस्तेमाल करके 4 एकड़ लैंड खरीद ली. Okay. Obviously there was a lot of happiness in that. And there were expectations. Now we'll be able to have a Vasa at the monastery site in 2022. So with that we had Bhumi Pujan, Ajan Kevli came along, Ajan Jandi and Pange. And then suddenly we find something else happening there. We find the neighbor is not cooperating and there is some issue. As आप लोग गए थे तो आपको पता होगा, और जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में पता होगा. So there are some unpleasant feelings or unpleasant occurrence, and the event happened, and when we came out, I could see that different set of people had different kind of perceptions, and as a result of it, different feelings about the event. So आप में से जो गए थे, can you describe what were their feelings and whether which category they fell in? Was there, of course, was there feelings of domanasya, उपेक्षा भाव, नेक्खम्मस्यतानि उपेक्षा, और ज्ञास्यतानि उपेक्षा, और ज्ञास्यतानि दोमस्य, और नेक्खम्मस्यतानि दोमनस्य. Different people share analyze their own experience in the light of this structure which we have. जो गए थे वो लोग जवाब दीजिए. सर, तो वो जो लैंड है या उसके साथ एक अपनी खुद की एक एक्सपेक्टेशन बंधी हुई है कि मॉनेस्ट्री बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ tanha in place, and for me I can say that it led to gay sitani domanassa on hearing कि अभी ये materialize नहीं हो पा रहा है. Anybody else would like to say? और शायद यहाँ पे जो साथ गए थे भारती जी हैं और Fire may not be aware of the whole story probably, but I've told in brief. सर मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता ये दो मनस्य और ये वाला, बट मुझे दोनों एक, because for me lot of things were linked to the land.
तो मेरे लिए दोनों था, इट वाज वर्ल्डली वाला भी और इट वाज दूसरा वाला भी, दोनों ही था। बिकॉज दूसरा वाला किस तरह से? जो एक स्पिरिचुअल बोल रहे हैं ना और एक वर्ल्डली बोल रहे हैं, दो टाइप ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस, अनप्लेजेंटनेस बोल रहे हैं। तो स्पिरिचुअल सैडनेस किस कारण, कैसे अराइज हुई? बिकॉज एक एक वो जो वही जो तन्हा का, जैसे दीप्ति ने बोला, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो अटैच्ड हैं मोनास्ट्री खुलने से। तो एक वो लगता है कि ओके फाइनली वहां पे करके एक फॉरवर्ड स्टेप होगा। तो जब वो नहीं हुआ तो थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग सा वो हुआ। और वर्ल्डली लेवल पे इसलिए था बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड अकॉर्डिंगली उसमें। तो इसलिए थोड़ा एक वो लगा, वहां पे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बट पता अभी मैं सोच रही हूँ रेट्रोस्पेक्ट, तो दोनों बहुत ज्यादा वो नहीं था, स्ट्रांग नहीं था, माइल्डर फॉर्म ऑफ डिसअपॉइंटमेंट थे। पता नहीं फॉर वॉट एवर रीजन आई हैड दिस थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क देमसेल्फ आउट सम वे और द अदर। तो बट एक दोनों लेवल का एक डिसअपॉइंटमेंट था, दो मनस। दूसरे, हाँ, आप जो स्पिरिचुअल डिसअपॉइंटमेंट, वर्ल्डली तो समझ में आता है, बिकॉज हम the thinking process was negative and the object which was which we had thought we had got it, we didn't get it, and that's clearly understandable. But how did it transmute into spiritual? क्योंकि सर वहां से मेरे दिमाग में, मेरे परसेप्शन में संज्ञा में ये रिलेटेड था कि इवेंचुअली वहीं बैठ के करना है एंड वहां से एक ग्रोथ होगी। हो सकता है ये वर्ल्डली ही उसमें हो, क्योंकि ये तो परसेप्शन बेस्ड वो था कि तो स्पिरिचुअल और हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो कुछ और है ना बेटा। हाँ जी, बेस्ड ऑन वो तो है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी, उस पे नहीं था। मैं वो गलत तो उसमें सोच रही हूँ, वर्ल्डली ही उसमें था। बट एक वो जो परसेप्शन था उसको लेकर अनसैटिस्फैक्शन और वो, बट इट वाज शॉर्ट लिव्ड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाई आई एम सेइंग स्पिरिचुअल के उसमें वो शॉर्ट, वो अंडरस्टैंडिंग थी कि वो शॉर्ट लिव्ड डिससैटिस्फैक्शन था। और एक ये इम्पर्मनेंस है इसमें, इवेंचुअली इट विल वर्क आउट। इम्परमानेंस ऐसा नहीं हो सकती कि इवेंचुअली इट विल नॉट वर्क आउट, ये भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, बट पता नहीं किस लिए वो था कि चीजें विल इवेंचुअली वर्क आउट। क्योंकि इंटेंशन अगर, मुझे ये लगता है इंटेंशन अगर ठीक थी तो इवेंचुअली इट विल वर्क आउट, ऐसा मेरा परसेप्शन व्हिच आई होल्ड। सो जब हम पहली बार गए थे तब लैंड पे जब वहाँ थे तब भी पता चला था कि जो नेबर है, एडजॉइनिंग नेबर, दैट पर्सन वाजंट हैप्पी कि यहाँ ये हो रहा है। तो वो थोड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी क्योंकि वहाँ बात हो रही थी इसीलिए। और दूसरी बार जब गए तब somebody told me, one of the group members that had gone, कि ये जो नेबर है he has created issues and we may not be buying this piece of land or we may have to give it up. तो मुझे ऐसा लगा था तब कि ठीक है, कम से कम यहाँ से खत्म हो गया। वहाँ एस्टैब्लिश होने के बाद परेशानियां आती और वो बहुत टेढ़ा होता तो और मुश्किल होता। कम से कम अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है ना। तो that is how I looked at it. And उसके बाद मैंने कभी इसके बारे में किसी से चर्चा भी नहीं की, बात भी नहीं की। तो मुझे फिर क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं पता है। But this is how my and I did not talk about this to anybody also, but this is how I had. जी हाँ जी, दीपक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं सेकंड टाइम नहीं गया था और फर्स्ट टाइम भी मैं थोड़ा टाइम पहले गया था। तो
मैंने इसको दो आयाम से देखा है, इस जो आपने बातें कही। एक तो प्रेमा फेसी ये है कि एक हम लैंड को एक रूप मानेंगे, वो हमें नहीं मिल रहा तो हमें एक ग्रस्त आधारित अप्रसन्नता हुई। लेकिन इफ आई व्यू इट फ्रॉम ए वेरी वाइड एंगल कि हमने जो मोनेस्ट्री सेटअप की थी उसका उद्देश्य ये है कि मैं भी और मेरे साथी जो हैं धर्म भाई यहाँ आके धर्म के मार्ग को और मार्ग पर आगे चलेंगे और किसी ना किसी स्टेज पे वो मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें जो मुक्त होने के रास्ते में एक और अप्रसन्नता आ गई, तो वो हमारा जो मुक्ति का सबका कलेक्टिव मुक्ति का टारगेट है वो और आगे हो गया। तो मैं शायद समझता हूँ कि ये त्याग आधारित अप्रसन्नता भी इन ए वाइड एंगल वी कैन से सो। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल एपिसोड। जी राजेंद्र जी, आप पहली बार गए थे ना शायद? दूसरी बार तो शायद नहीं गए थे, पहली बार शायद गए थे। यू लाइक टू से एनीथिंग? राजेंद्र जी नहीं है, और तो शायद शिवेंद्र, you want to say anything? Or Nikhil, you were also there. Geeta was also there, I think. पूनम जी, गीता, अपूर्व भी गए थे। Would you like to say anything? What was your feeling and which category? Anybody who experienced equanimity? सर मेरा था इक्वालिटी था मेरा। बताइए ना, उसका बेसिस भी बताइए थोड़ा बहुत। मेरा बेसिस वही था कि धर्म का काम है, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो हमारा कौन सा स्वार्थ है उसमें। और थोड़ा मेरा ये भी था कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम उसको ऐसा ख्याल बना लेते हैं कि वो हमारे लिए एक थोड़ा वैसी जगह हो जाएगी जहाँ पर हम जाके रिलैक्स करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे या उम्र ज्यादा हो जाएगी, या कुछ ऐसा विचार भी आता है कि चलो कुछ बना लिया और वहां जाके थोड़ा बहुत हम में भी भिक्षुओं को प्रणाम करेंगे, कुछ पुण्य कमा लेंगे। बट रियल काम तो अभी करना है। तो अगर हम अभी कर रहे हैं तो हम हमारा काम तो अभी चालू रहना चाहिए। अगर बन जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है हमने प्रयास तो किया है, ऐसा करके मेरा भाव था। गुड, वेरी गुड। एंड और गीता? सर तो एक तो मैं तो जा ही नहीं पाई सर, आधा रास्ता ही गई थी। तो आई हैड दिस एक्सपेक्टेशन दैट आई विल गो एंड सी द प्लेस वेयर द मोनेस्ट्री इज गोइंग टू बी, वेयर इट इज गोइंग टू कम अप। तो पहले तो एक वो विचार से मुझे प्रसन्नता हुई, एंड व्हेन आई कुड नॉट गो तो वहां पर थोड़ा सा गृहस्थ दो मनसी हुआ था। उसके बाद में व्हेन आई रिफ्लेक्टेड, and it was for a very short lived because I didn't drag it, क्योंकि मुझे एक मन में ऐसा भाव आया कि maybe next time I will get an opportunity to come, so it is better that I didn't get a chance to come and see this place. तो मुझे ऐसा मेरा मन में एक विचार आया था, तो मुझे वहां पे दुख नहीं हुआ था सच में। neither I would say there was a happiness, there was no unhappiness। तो मैं संभव की तो बात नहीं करूंगी, और मैं भूल गई उसके बाद में the moment I came back from that place। तो उसी समय पे I was like okay with it, like you know it didn't I didn't drag it in my mind or for a very long time, so I don't know how to define that. So, Shivendra, anything you like? और पूनम? सर जब मैं पहली बार गई थी तो जब चैंटिंग हो रही थी तब मेरे ऐसे मन में विश्वास, मैंने अपने इसमें
अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कि कि आई विल डू वॉट एवर आई कैन डू फॉर द मोनेस्ट्री. अगर जैसे भी आएगी, in whichever way I can contribute, I will do that. So that was मैंने ठीक है, मेरे बाद में इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, मतलब एक बार सुना मैंने कि ये नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने उस चीज पे कुछ ऐसा, मेरे इसमें कोई भाव नहीं आया वो. और लेकिन जब हम सब एक साथ इकट्ठे हुए और जब हम बैठे हुए थे, तब मेरे दिमाग में जरूर ये था कि आई विल डू. मतलब एक वो था कि संकल्प कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देयर वाज दिस थॉट अरोज इन मी. और फिर मैंने या दैट वाज इट. और सेकंड टाइम ठीक है, इट्स ओके इफ वी आर नॉट एबल टू गो. जितना मेरे को उससे लैंड से मुझे आइसक्रीम से ज्यादा इतना वो नहीं है. मेरे को लैंड से मुझे नहीं मालूम, कोई मेरा रिएक्शन नहीं है. बट ये है कि मतलब मैं जब मैं वहां पर पहली बार भी गई थी, तो मुझे लगा था कि क्योंकि मोनेस्ट्री चाहे कैसी भी होगी, वो आएगी, तो लोग जो हमारे गांव वाले, गांव वाले, we should, because they will be dependent, all the monastery people is going to be dependent on गांव वालाज only ना. So क्योंकि वो फर्स्ट हैंड भिक्षा के लिए जाएंगे, तो मुझे लग रहा था कि that we should have cordial relation with them. That was my So एक मेरा रिफ्लेक्शन था वहां पर, like that this because it was raining also and I didn't expect it, तो मुझे पता ही नहीं था. तो मुझे एक मतलब दुख बोध तो नहीं जागा था, स्लाइटली इट वाज देयर बिकॉज आई कुड नॉट गो एंड सी दैट जो एक्चुअल प्लेस देख नहीं पाई मैं. पर वहां पर एक आधा दूर जाने पर एक मन में एक प्रसन्नता भी जागी थी. एटलीस्ट आई कुड रीच अ सर्टेन प्लेस एंड सिट एंड मेडिटेट. तो वहां पर, और जब शाम को आने के बाद में अजान के लिए का हमने जो प्रवचन सुना था, तो उन्होंने ये बात बताया था कि ये कंडीशन फिनोमिना है. तो देन आई लेटर रिफ्लेक्टेड like it's part of nature, like one there is no control over the nature as such. How much ever you wish to do what you want to or want to see, probably I reflected this way. Maybe it was like I was not destined to go and see that place as such. यही भाव आया. आई डोंट नो वेदर आई वुड से इट एज दुख हुआ, बट इतना तो था कि ये अनित्य है और कंडीशन के हिसाब से, एंड let the nature play its role. But deeply तो I would not say कि कोई फीलिंग के आधार पर मैंने बहुत रिफ्लेक्ट की थी, ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा है ऑनेस्टली. बट थोड़ा सा वो कहने के बाद में मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे वो हल्का सा वो थोड़ा सा वो निकल भी चुका था. देन लाइक I was more at peace. Like मुझे because I didn't even think about it, or I didn't even go and talk about it saying कि I wanted, I had come and I wanted to see this place, or ऐसे there was no clinging as such, if I can describe it in that word. I don't know how do I put it as such, but it was okay for me as such, because for me more was like I came half and I could get whatever possible, so I was more than happy in that also. Yeah, I wanted to say, हाँ जी, जब आपने मुझे बताया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, समहाउ ट्रस्ट की तरफ से भी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने मुझे बताया कि भाई उसमें तो वो डिस्प्यूट हो गया और वो लैंड अब हमारे पास नहीं है. तो जिस तरह से आपने मुझे बताया, तो उस समय तो मुझे दुख हुआ जरूर थोड़ा सा, बट आई डिड नॉट कैरी इट मच इन माय माइंड. So I think it was for very brief period that I was feeling bad about it. I can say it was grace Hadar Aprasannata, but nothing very deep. That's what I have to say. एक सिर्फ निखिल ने कुछ कहा रिगार्डिंग जी गैस्तानी उपेक्षा, कि उनको ऐसा महसूस हुआ. तो अगर can you visualize somebody experiencing
Nekhammasita upekha under this condition? What would be his mind's set or perception, or the way he would be thinking to take this situation, to experience that situation and experience Nekhammasita upekha? Any thoughts on that? But I think the moment they would hear that news, the thought maybe would be, what else do you expect? That's natural. So, backed by the fact कि वैसे भी चीजें uncertain है, big deal, and they would be like, yeah. So neither sukh nor dukh, but a acceptance of the way things are in that situation, and not being insensitive to it. I mean, I guess they would also acknowledge that there's a lot of इसके पीछे effort रहा है, इतने लोग वहाँ पे आए भी हैं, बहुत कुछ चल रहा है और होते हुए ये हुआ. That kind of acknowledgement makes it. And at the same time, it would not lead to somanassa or domanassa. Now, suppose I change the situation. It was not the monastery being set up. It was our personal home which we had designed to set up there. We purchased a land for setting up our own personal home or a farmhouse or whatever else you can think. How would mind respond to the kind of situation which we experienced at the time of the first visit? First visit when things were looking in the positive direction? No. So at the first visit, probably many people didn't know that it was happening. But there are many people who knew what's happening. Sir, dukh multiplied by many fold times, plus a lot of proliferation. यहाँ पे तो जैसे हमने बहुत से लोगों ने बोला कि उसके बाद तो मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं, but वहाँ तो proliferation, a lot of I'm putting myself in that situation. मुझे लगता है कि मैं बहुत से लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसके वजह से उसके वजह से, मेरी वजह से, एंड कि अरे हमने इतना काम किया, इतने टाइम से इसको ढूंढा, इतना एफर्ट लगाया और ये देखो क्या हो गया. सो अ होल लॉट ऑफ द्वेष, अ होल लॉट ऑफ बैग्ड बाय द राग जो होगा कि ये जब आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, उसके प्रोपोर्शन में उतना ही डोमिनेंस से जागेगा. I mean, and at the same time, then obviously, once I've dealt with the whole situation, it's like, फिर कहीं पे strike करेगा, अनिच्छा. Things are anicca. So then maybe I will rationalize for myself, अरे हाँ, things are ultimately anicca. So from गृहस्थ domanassa to गृहस्थ संभाव, कि हाँ ठीक है, okay, let's move on. But I guess that will be grihastha sambhav. Good. So why is it that the same event is having a similar event is having such a large difference? When it is a monastery, the impact is very small, and if it is my personal home, then the impact is so large. होम थोड़ी है, मेरा होम है वो. Sense of self. मेरी मोनेस्ट्री नहीं हो सकती? सर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं, मे बी द ट्रस्टीज, probably there is a possibility, while Dipti was explaining, it would have definitely affected, sir, because they experienced that kind of a difficult time or whatever it is. So I assume, I'm not too sure about it, जरूर हुआ रहेगा.
अगर मैं हैबिट बनने वाली होती तो शायद ऐसा होता कि दुख मैनी फोल्ड होता, but I still have a feeling कि if it was my own home, I think it will be proportionately much higher. मैं ये दर्शक कहना चाहता हूँ, जो मुझे इसके बारे में इतना पता है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मोनेस्ट्री का कंसेप्ट आपने ही ओरिजिनेट किया था, जहाँ तक मुझे पता है जी। You have been very keenly pursuing it for your benefit and for benefit of all of us and for the benefit of all those who come there in future. आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा इस पे, बाकियों को शायद इतना हुआ या नहीं हुआ। आपको आई थिंक यू मे बी टचिंग दैट लेवल कि मेरा पर्सनल इसमें मुझे अनप्लेजेंट ज्यादा है इसमें, मुझे लगता है शायद बाकियों को उतना नहीं हुआ होगा। जी, गुड। सर ये जो आप सिचुएशन बोल रहे हो ना अपने घर का, और ये थोड़ा सा अकिन है टू व्हाट वी वर प्लानिंग, अ कपल ऑफ अस वर प्लानिंग टू फ्यूचर ओवर देयर ओनली, टू सेटल ओवर देयर ओनली। तो वो थोड़ा सा उसके वो उसका है, बट फिर भी पर्सनल उस पे मुझे मोनास्ट्री नहीं आने का थोड़ा ज्यादा दुख था, क्योंकि घर तो एक है, ऐसा नहीं है कि घर नहीं होता या वो नहीं होता, बट मोनास्ट्री उस लेवल पे प्रोबेबली इवेंचुअली अगर होता तो जैसे दीप्ति बोल रही है कि अपने उसका मल्टीफोल्ड होता, बट उस टाइम पे मुझे ज्यादा दुख ये हुआ था कि ओहो मोनास्ट्री का वो आई मीन फ्यूचर प्लान तो जो गए वो जो ऊपर नीचे हुए, बट मोनास्ट्री का भी एक लगा था कि ऐसे, बिकॉज इट वुड ऑल स्टार्ट फ्रॉम द मोनास्ट्री, आई मीन वो एक पॉइंट होगा, उसके आसपास वर्क अराउंड करना था। तो जब वो हुआ था तो मोनास्ट्री का भी लगा था कि ओहो, प्रोबेबली बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक ही वो है, एक छत पे छत है एंड वो फर्स्ट नहीं था, तो प्रोबेबली वैसा वो था। बट मोनास्ट्री का भी दुख तो था, एक अटैचमेंट सी आई वुड से उसके लिए भी थी, बट मन में ये भी मेरे को तो ये था कि थिंग्स विल वर्क आउट। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा राग वाला इंसान हूँ, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग, कुछ भी उसमें मुझे लगता है मिरेकल ही हो जाएगा, इन एवरी सिचुएशन पता नहीं क्या मिरेकल ही हो जाएगा। तो एक मोनास्ट्री का भी था, प्रोबेबली पर्सनली उसमें से निकलते कर लिया होता कुछ तो एक्चुअल में पता लगता, बट मुझे उस टाइम पे थोड़ा मोनास्ट्री का ज्यादा लगा था। So what is the learning from all this discussion? ऐसा क्यों मानते हैं कि नहीं होगा? मैंने ऐसा कभी नहीं माना। इवन जब पता चला था बाद में, नहीं हाँ ये सारे हर्डल्स आ रहे हैं, मगर होगा तो सही ही। इफ नॉट दैट प्लेस एग्जैक्टली दैट वी हैड गॉन एंड सीन, अगर कहीं तो होगा ही। आई नो बहुत मेहनत है, मैं मानती हूँ बहुत मेहनत की है, मुझे पता है, मगर इतना इसके पीछे परेशानी होती, इतना झंझट होता होने के बाद, उससे तो अच्छा है कि इट्स लाइक निपिंग इन द बर्ड लाइक, तो हो गया। अब जहाँ पे होगा वहाँ ये सारी चीजें पहले ही दिखी जाएगी शायद, अड़ोस पड़ोस We're not thinking of salvaging the situation or होगा या नहीं होगा. I'm not thinking of that. I'm saying what is the learning for us from the point of view of दो मनस्य उपेक्षा भावना सो मनस्य from this discussion. And what would be a response of nekhamasita upekha and what would be a response of nekhamasita and gaisita upekha to the situation? थोड़ा तो सामने आया है to a situation of this kind. What will be the state of mind of? So what I feel is with this situation or any situation, the person who is directly involved experiences more happiness or unhappiness, whatever is the condition situation, than the person who's just playing a part of it or doesn't have any
actively, like, just jitna hai, like as a person who's coming and visiting, तो वहां तक एक लेवल होता है लिमिटेशन की, वहां जाना है, मोनेस्ट्री देखना है, वो ना देखने पर वो दुख होता है। बट ये होने वाला है या नहीं, आई एम लाइक द वन हु गोज थ्रू द प्रोसेस, one who goes through all these experiences has a more impact than the others may have a less impact on this in kind of happiness or unhappiness, is what I feel, because the person who is going through it's very difficult for that person as such who's directly involved in it. Okay, thank you. So maybe I'll ask Bhante ji to say something. Yeah, because he has been involved in various ways, right from time t equal to 0. yeah. So from t equal to 0, जो शायद 2016 की बात है, और जब एक वो मकाम आया था जब 2017 में when we were almost at the cusp of the same land at a much reduced price, I think मेरे लिए तब एक काफी important watershed था, क्योंकि वो जब हम उस समय 2017 में for many reasons, जब when we didn't go ahead with it, तब of course there was very strong aversion, है ना, which was of course entirely worldly in nature. उस समय पे काफी आई थिंक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ डिस्कशंस हुए थे धर साहब के साथ, और तब उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही जो कि मेरे साथ लगभग कंसिस्टेंटली रही है तब से, कि एक्चुअली उसका मकसद वो फिजिकल बिल्डिंग्स या मोनेस्ट्री बनाना नहीं है, वो तो एक जरिया है। उसका मकसद हमारी अपनी जर्नी टुवर्ड्स लिबरेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ a place to stay in and a monastery and so forth, but उन experiences के माध्यम से किस हद तक हम अपना wisdom को cultivate कर पा रहे हैं। and wisdom is ये तीनों चीजें जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं। so मुझे ऐसा लगा कि उस समय पे एक शिफ्ट हुआ, तो फिर मैं इस एंगल से देखने लगा कि भाई ये सारा ही जो सो कॉल्ड मोनेस्ट्री रिलेटेड काम हो रहा है, इसमें किस किस तरीके से मैं अपनी विजडम फैकल्टी कल्टीवेट कर सकता हूँ। उसके बाद आई थिंक करीब 3 साल तक कई चीज़ें हुई, कई कोशिशें की, अप्स एंड डाउन्स रहे, तो उसमें भी there kept coming up various pleasantness, unpleasantness, जो कि सारे ही वर्ल्डली कैटेगरी में थे। तो जो विजडम वाली बात 2017 में हुई, वो एक उसका बैकग्राउंड था, लेकिन आई थिंक वो बहुत डीपली रूटेड नहीं थी तब। और जो सबसे लेटेस्ट राउंड हुआ, आई थिंक जब एक्चुअल परचेज किया गया, उससे एकदम पहले जो हम लोगों ने विजिट की, मुझे तभी भी दिखा के तभी भी थोड़ा सा worldly both pleasantness and then related to some incidents worldly unpleasantness सामने आई। उसके बाद से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि it seems to me due to very deep मेरे ख्याल से जो ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और उन उतार चढ़ावों का जो नेचर है, जो उसमें पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उसके बाद से I noticed that there isn't really that much that is shifting. और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब कुछ मेरा रोल होता है तो उसको मैं पूरी एनर्जी से करता हूँ, तो मुझे ये भी एक चीज़ दिखती है कि उसमें इंडिफरेंस एक्चुअली नहीं है। एक आध बार इंडिफरेंस क्रीप इन हुई है, आई कुड सी दैट आल्सो, लेकिन लार्जली इंडिफरेंस उसमें नहीं है। देयर इज ट्रूली अ सेंस ऑफ let me do the best I can as much as my role requires, and then what happens happens. तो मेरे लिए ये जो एपिसोड है ना मोनेस्ट्री वाला, इट्स बीन अ ग्रेट एग्जांपल एक्चुअली। एक तो काफी रोलर कोस्टर्स का, और फिर
ये to see something which obviously for me personally is very it's the same as जो धर साहब ने example दिया ना अपना घर बन रहा हो तो क्या होगा. So it's like that, and I think it's really helped solidify 3 characteristics on this. अभी वो पूरी तरीके से irreversible है कि नहीं तो पता नहीं मेरे को in this domain, that I don't know, but I can notice that in the last 6-10 months it's not gone too much up and down, जबकि external situation पिछले 6-8-10 महीनों में काफी up and down रही है. Was that what you were looking for, Darshan? Yeah, good. Thank you very much. Yeah. Well, that's it. That's about all. As for myself, I can also say almost same thing as Panteji has said. We've seen the things go through so many ups and downs. The first time when we had almost cleaned the deal and given up for certain reasons, that was a period quite tumultuous period, and I had a lot of explaining to do why I said we let us give it up, because it was not easily palatable decision. And in hindsight, one can say that was a wrong decision. But that's the way it was from the world material and worldly point of view. But what would have been the consequences of that, we don't know. So the fact is that there was, but then slowly and slowly clarity arose that there's only setting of a monastery, doing this is a noble wish behind it, but it's certainly a means to an end. It's not the end in itself. And when the deed was finalized, when we visited in March this year, it was obviously a pleasant phenomenon. We're always, I remember talking to Bhanteji, keeping the fingers crossed. We never know what's going to happen next. And that exactly turned it out to be like that. A thing which we never anticipated, because from the buyer, when he purchased, he said, everything is fine, I'll get everything. And he showed us the papers, we saw the documents, everything, registration paper, everything, whatever we could do, we saw. They're all in fine. We went to the Patwari, he said, they're fine, this is their land, everything is good. And yet we had kept our fingers crossed. ठीक है, आगे देखो क्या होने वाला है. And it turned out something else was happening. And it was since we were almost prepared for something to go on. It was an unpleasant feeling for some time, but it didn't really last much. And when finally, even after purchase of the land, there was again some feeling of pleasant feeling. Okay, something has been done. Again, we knew that something is amiss, and that turned out to be when we actually went there. Because then I was not directly involved in the commercial aspect of it. So when the function was arranged for Bhumi Pujan, we knew before the Pujan that things were in dire straits. So the mind had enough time to come to equilibrium and take it with things are impermanent, and if it has to happen, it will happen. If it is not to happen, that also is fine. If it does not happen, that also is fine. That's the kind of state of the mind. Because it's not we who are doing it, we are only instruments in the hands of nature. If it's not the right time, right place, we're not. So what? We tried and we learned a lot in the process. We developed ourselves. So with that kind of understanding, it is naturally moving towards it. Nekhamasita Vekhana. Slowly it is moving in that direction. See that. Sir, The object being what it is, that's okay. Okay. So yes, sir, Geeta, when you you want to said say some short when comment? you said you had almost given up at the first time, uh, so I No, just wanted to check if I I didn't say we had given up. I said the the decision. deal had been stuck. I mean, almost the rate had been finalized. Everything was done.
But some members of the trust said that we are not in a position to do this. This is not premature. The first time, right? Yeah, that was in 2017, which Bhanteji referred So was that there was a upeka equanimity when the decision was taken? Because we discussed it. Initially there was unpleasantness. That's how उस समय, at least for me, the upeka came much later. Yeah. उस समय कोई upeka टुपेका नहीं थी. And I was at the receiving end from all quarters. So that was a very great teaching for me. Yeah, that was the lesson actually. Yeah, I was at the receiving end from those who wanted not to do, as well as from those who wanted it to be done. And I had to do very funny things that had to be done in the Dhammarama when it was under construction. So it was very, very, very strong exchange. You know, our exchanges between Arpan and me are not like quote unquote civil interactions of this kind which we have here. They can be pretty strong interactions, and we leave no stones, no holds barred in expressing difference of opinion, and that's it. It's fine. But it slowly and slowly led to Pekha, and you could see that. And it's not obviously in the beginning it was quite unpleasant to be at the receiving end from both the friends, all the friends there. So slowly and slowly we reflected deeply कि क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं. Well, even if Dhammarama does not come up, fine, that's okay. We'll meet once in a year. What is it? What is there? And this whole thing of meeting regularly happened out of blue. We didn't plan it. I didn't know. Corona came before the Corona came, I had planned I would sit for 10 weeks this year, 2020. The point what I was making is the more so things we happen naturally. experience, yeah, so but I've come to see that over the years, I've come to see that you have an intention and let leave the rest, whether it will fulfill or not. It depends on so many circumstances. Sometimes you don't have intention, and yet things happen. Nature creates conditions for that thing to happen. I didn't have intention that we should have. I didn't even know this Zoom business. Initially, you would remember, we did it through YouTube. We didn't know that. I asked Deepak, and he said, "Yeah, YouTube mein kuch ho sakta hai," and then we did something. So it was not at all planned. It was not intended. Nothing. I just wanted to do for myself. But then I realized यार ये सारे लोग तो बिल्कुल ही बंद हो गया, धमारामा ही खत्म हो गया, अब क्या होगा. सारे हमारे मित्र लोग तो बेचारे जो एक संघ बना था वो टूट ही जाएगा शायद. ऐसा that thought arose. So I said, okay, let's open it up. I talked with madam. I said, okay, let's try and do at least 5-7 लोग भी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, धीरे-धीरे मिलते रहेंगे. And it was stabilized to some semblance of a form. And it may disintegrate again. Who knows? Who knows? They're prepared for that. Fine. That will be the experience of anicca again. So that's the path of training for us. I've just shared with Bhanteji has shared. That has been our training through these processes. As long as you look at all the life's experiences, training ground, everything is fine. Everything is. So that's it. We are here in as Ajahn Jaisaro beautifully puts it, we are undergoing an educational program. This is Buddha's teachings are an educational program. So you do first class primary, then secondary, then college, then this, then that. And when you do crossover PhD, then you say, okay, you are now entering the stream of liberation. Fine. So he puts it very nicely. It's an education program, and education is through the life's lessons, life's turmoils, the tests which we undergo through the life. And from those tests, we learn lessons. Just the opposite of school. In school, we learn lesson first and give the test later. So once we have that attitude, शुरू में दिक्कत तो होती है भाई. We are not perfect. There is unpleasantness. There is crying and wailing. And very soon finishes off. It takes the shape of
great understanding and equanimity, and our insight into three lakhanas became stronger. That has been our experience, and I'm sure it will be for all of us in due course. Okay, Sharmaji, anything? Yes, sir. Brief? Anything brief? Sure, sir. Though I have not been directly connected with this thing, but I had made certain just plan that I will be passing some time there and will do medicine there, and I will be having good company there. And just I came to know today itself that there has been some problem. As soon as I know from here, from just I heard it, and today's things, and I felt bad, and some anger type arose in me. Why the persons do not like these good things? So still now, because it was slightly which I planned, unknown, not known to anyone, and the things went to another way as I knew just now. I feel bad, and this arose my slightly curiosity also. Was it a disputed land or some other thing, sir? Just a Was it disputed land or no? There's no dispute that we had checked already. There's some other problem. okay? Let's leave at that. Okay. There's no problem on that. Okay, There's sir. a dispute with the neighbor actually. Neighbor has some dispute. Not in the records there is no dispute, but the neighbor's mind there is dispute. So, and we wisely decided that we want to have a monastery with a neighbor who is having disgruntled. Okay. So we said, okay, we gave in. Money okay, safe. we'll get an Money. alternate place. Money safe. Will come in due course. Yeah. Okay. We haven't done any deal which will not result in monetary loss of any significant amount. Yeah. Because everything is done in official legal manner. So there's of course the price of the land may go up or down. That is not within our This is different thing. Yeah. There's no issue of that kind. Yeah. Okay, thank you very much. So